Good noon, everyone, and welcome back to PPS Lab Sessions. Um, in the last lab session, we had gone for a number of programs from maybe 18 to 22, I believe, right? Reverse number, then first n numbers of Fibonacci series, and so on, up to 22. And this is what we have completed. And if you haven't, then I suggest that you sit some in some extra time and try to complete it. And wherever you feel there is a problem, you may ask me in a lab session once we have a practical time, once I'm done with my announcements, right? After that, whatever time we have in a lab, you can have an interaction with me, and we'll solve those problems. For today, what I plan is we want to go for programs starting from 23 to 28. Okay. So what we'll do is we'll discuss these programs one by one. Some of these programs I'm going to show you, and then later on you'll have your time to complete all these programs, right? So 23rd program, it says read 5-person height and weight. Let me clarify. In lecture session we are working with arrays, लेकिन ये सारे programs जो अभी आप कर रहे हो in lab session does not require array. Let me clarify, क्योंकि अब lecture में array आ गया है, यहाँ पे अभी भी for loop चल रहा है. So this kind of confusion may happen. इसलिए मैं ये clear कर दूं कि अभी भी lab में आप जो भी program कर रहे हो, ये सारे प्रोग्राम में से एक भी प्रोग्राम एरे रिलेटेड नहीं है. यू हैव टू कंप्लीट दिस थिंग यूजिंग लूप ओनली. अब अगर ये बोलता है कि 5 पर्सन की हाइट वेट लेनी है, देन you can have one variable for height, another variable for weight, और लूप चलाओ. हर बार एक ही वेरिएबल के अंदर आप वैल्यूज गेट करते जाओ, चलेगा. 5 पर्सन की हाइट वेट आपको स्टोर रखने की जरूरत नहीं है. यू कैन ओवरराइट दैट थिंग. सो यू हैव टू रन वन लूप, 5 बार चलेगी. उस लूप के अंदर आप हाइट और वेट गेट करोगे. एंड व्हाट इट सेज टेक हाइट एंड वेट एंड काउंट द नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग height greater than 170 and weight less than 50. So जैसे ही आपको हाइट और वेट दोनों मिल जाए, आप क्या करोगे, आप इफ कंडीशन लिखोगे and you are going to check height is greater than 170 or not, and you'll also check weight less than 50 or not. अगर हाइट 170 से ज़्यादा है and weight 50 से कम है, तो आप एक काउंटर वेरिएबल ले लोगे, एक्स्ट्रा वेरिएबल, और उसको इनिशियलाइज करो 0 से. And then inside this if condition, if height is greater than 170 and weight is less than 50, then आप क्या करोगे, आप सिर्फ वो काउंटर प्लस प्लस कर दोगे. So inside your loop you get height and weight, then you check height greater than 170, weight less than 50, then you increase your count. Else में आपको कुछ करना ही नहीं है, तो else लिखने की जरूरत भी नहीं है. Fine. So that's how you can easily complete this 23rd program. If condition and if के अंदर counter plus plus. Now once you are done with all those inputs, last में आप अपना counter print कर दो, तो आपको मिल जाएंगे कि कितने पर्सन की height and weight की condition true हुई थी. That's it. Okay. So that's the 23rd program. Then 24th program says write a C program to check whether the given number is prime or not. Now, before we jump to this thing, I want to ask you,
and you tell me in the chat box, what is a prime number? What do you call a prime? So Jay is saying it has a factor 1 and number itself. Yeah, that's perfect. But in this one, again, question comes, what is factor? Might be some students might not be aware of a factor. Then what is a factor? Whose factor is 1 in itself? That's correct, Yusuf. Multiple, yeah. Look, when you achieve one number by multiplying other two, then those two numbers are, we can call it a factor of the resulting number. Like 3 multiplied by 2 can be 6. So 3 and 2, these two are actually factors of 6. Now, in other word, you can also say that if you can divide a given number, if you can divide a given number by other number, then that number can be a factor of given number also. So you can divide 6 by 3, then 3 is a factor of 6. You can divide 6 by 2, then 2 is also a factor of 6. Factorization, if you can perfectly factorize your given number, then those are the factors. And now comes to the prime number again. अगर आप given number को, that number itself and 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो, ये आपको पता है. और कोई भी नंबर को आप उसको उसी नंबर से भी डिवाइड कर पाओगे, ये भी आपको पता है. बट अदर देन 1 एंड द गिवन नंबर इटसेल्फ, अदर देन दीज टू, कोई भी नंबर से अगर आप उसको डिवाइड नहीं कर पाते हो, देन इट इज अ प्राइम नंबर. सो 2 से लेके गिवन नंबर -1 तक आपको हर बार चेक करना होगा, कैन आई डिवाइड दिस, कैन आई डिवाइड इट, कैन आई डिवाइड इट. अगर डिवाइड हो गया, परफेक्टली डिवाइड हो गया, देन इट्स नॉट अ प्राइम नंबर. लेकिन अगर किसी भी नंबर से आप डिवाइड नहीं कर पाते हो, देन it can be called a prime number, right? So that's how we can define whether the given number is prime or not, and that's what we need to implement here as a program. So let me show you this program, because this is somewhat logical process you need to think of properly. So let's go and do this program here. So we are doing 24th program, which says write a program to check whether the given number, तो पहले तो एक number लेना पड़ेगा. Let's go and start our program. So we'll go for hash include stdio.h and we'll start our int main, and we will take one number first. So let us print a proper message for user. Please enter a number, and we will take that number from user. So scanf %d ampersand num. तो ये नंबर तो मैंने ले लिया. Now what we want to do is we want to print at the end. पहले तो हम चेक करेंगे कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं डिसाइड कर लूंगा, मुझे एक मैसेज प्रिंट करना होगा. And that message is something like, let's say, given number %d is prime number, और वो num से print करूँगा. Now, I need to print proper message, right? So we can say this is a prime number, या तो फिर हम ये बोलेंगे कि this is not a prime number. राइट? तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्राइम है या नहीं है? तो हमें कुछ ना कुछ तो कंडीशन चेक करना पड़ेगा. सो वी कैन, इफ दैट कंडीशन इज ट्रू, वी कैन से it's a prime number, else we can say it's not a prime number. Correct? Now we need to decide it based on our process. And what is the process? The process that we have just discussed. वो प्रोसेस क्या होगा?
तो जो भी नंबर हमें मिला है 2 से लेके अप टू दैट नंबर -1, वहां तक मुझे चेक करना होगा, कैन आई डिवाइड दिस given number divide by that, can I divide it perfectly? So is it 0? Now we are going to repeat this task. 2 से लेके num -1 तक जाना है. So we need a for loop. For I equals to 2, तो एक I declare कर लो, I ले लिया. So we start with I equals to 2. I is less than or equals to num -1 तक जाना है हमें, right? And then I plus plus. So ये हो गया हमारा लूप, और इस लूप के अंदर हमें चेक करना है. So we are going to do this check. If given number divide by I is equals to 0 or not. Try to understand this process, right? यूजर ने जो भी नंबर दिया 2 से लेके वो नंबर -1 तक, मैं हर बार I से इस नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ. Can I divide this number using I? And what is I? I is starting from 2 up to number -1. So हर बार मैं चेक कर रहा हूँ, given number divide by 2, given number divide by 3, given number divide by 4, divide by 5, divide by 6, divide by 7 and so on. अगर वो perfectly divide हो गया तो हमें फैक्टर मिल गया, और अगर फैक्टर मिल गया तो वो प्राइम नहीं है. अगर वो प्राइम नहीं है, then I need not to go for further process. मुझे ये लूप फर्दर चलाने की जरूरत भी नहीं है. So what we can do is we can break this loop here. Now comes the usage of break statement in a loop. So ये break statement क्या करेगा, अपनी लूप को ब्रेक कर देगा. तो चलो ये लूप तो टर्मिनेट हो चुकी है, but after I terminate this loop, again I need to check whether this loop has been perfectly executed या तो फिर पहले से ब्रेक हो गया. ठीक है, यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि ये लूप पूरा चला या बीच में ब्रेक हुआ. सो फ्रॉम दिस आपको एक सिग्नल भेजना है यहाँ पे. लेट मी टेल यू अगेन, ये लूप जो चल रहा है, ये लूप में से आप एक सिग्नल भेजना चाहते हो टू दिस इफ कंडीशन, और वो सिग्नल क्या होगा, दैट सिग्नल विल बी डिपेंडिंग ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ योर लूप. अगर ये लूप पूरा चल गया तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ये लूप बीच में से ब्रेक हुआ तो मुझे वो सिग्नल सेंड करना है. इट्स काइंड ऑफ अ फ्लैग. आप एक जगह पे बैठे हो, आपका दोस्त दूसरी जगह पे बैठा है, आप वहां पे जा नहीं सकते, लेकिन वहां पे आपको एक सिग्नल भेजना है, तो आप एक फ्लैग उठा लोगे और यू विल वेव दैट फ्लैग, राइट? तो वहां पे बैठा बैठा आपका फ्रेंड भी समझ जाएगा कि ओके मुझे सिग्नल मिल गया. सो दैट्स व्हाई वी विल रिक्वायर वन मोर वेरिएबल, लेट्स कॉल इट फ्लैग. अब इसका नाम फ्लैग क्यों रखा? बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ सिग्नल आई वांट टू सेंड. अब ये फ्लैग को मैं पहले 0 रखूंगा. So I'm going to initialize this flag by 0. So I'm not waving that flag at this point of time. लेकिन अगर मुझे कोई भी फैक्टर मिलता है, then I'm going to set that flag equals to 1. So जैसे ही मुझे एक फैक्टर मिला, I wave that flag. मैंने वो सिग्नल दे दिया, right? So that's the flag value 1. अब आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे प्राइम है या नहीं है. अगर मुझे फैक्टर मिला तो फ्लैग 1 हो गया, और जैसे ही फ्लैग 1 हुआ, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर. वो प्राइम कब कहलाएगा? when still it is not waving. So if your flag is still equals to 0, तो आपका नंबर प्राइम है.
वरना आपको फैक्टर मिला होगा, फ्लैग 1 हुआ होगा, and you can say it's not a prime number. Yeah, so that's the use of a variable which works like a flag. Fine. And this is the program which decides whether the given number is prime or not. Let's check it out. I'm going to run this program. It asks us to enter a number. So let's say अगर मैं 6 देता हूँ, then 6 is not a prime number. Oh, well, it says is a prime number. Then we need to check it out why this happens. So let's try to identify the problem here. I've given 6, and we have that in the number variable num, ampersand num, percentage d. So that's perfect. Now I equals to 2, num divide by I, double equals to 0. Oh, yeah, num divide by I, if it is double equals to 0, then we set flag 1, and here we check it. Is a prime number, flag becomes 1, so this should not be the case. Let me save it again. I just want to check whether the problem is related to, no, it's not a problem related to execution. Just a minute. Is it a problem related to this operation? Need to find it out. No. If flag is double equals to 0, still if flag is 0, then is a prime, else not a prime. 0. Look, I'm not looking at your chat box, so if anyone finds the problem, if anyone points out the line, you can unmute and speak here. अगर आपको मिल जाता है before me, that's very good. Try to find the problem and point it out. We have a number, we have I, we have flag. We take that number, ampersand num, we run a loop I equals to 2 से लेके I plus plus I less than number minus 1, and we divide that number by I. Yeah, that's perfect. And we check whether that, oh, the problem is we need to check the remainder, not division, but we need to check remainder here. That was the problem. Look, when I say perfectly division is possible, then remainder should be 0. So what we do is we need to check remainder is 0 or what. If remainder is 0, then that's the factor, and then we set the flag. Okay, so that was the problem, not a division, but we need to check remainder here. And now let's run this program. And if I give 6, then it says 6 is not a prime number. Okay, now if I run this program and give 7, then it says 7 is a prime number. Yeah, so that works perfectly now. The only problem was we need not to perform division operation, but we need to perform the remainder operation here, modulo sign, because we want to test what is the remainder. Remainder is 0 or remainder something else. Yeah, so that is the prime number program, practical number 24. If you want, you can take a screenshot very quickly so that we can move towards the other programs now. સર Okay, yes. સર ફ્લેગ વાળું એકવાર કહી દેજો ને જે એકવાર. Okay, look, flag is nothing but kind of a flag, real flag.
what we are doing here, or let's say you have asked me in a Gujarati, let me explain this in a Gujarati. આપણે શું કરીએ છીએ, આ લૂપમાં આપણે એમ ચેક કરીએ છીએ કે કોઈ ફેક્ટર છે કે નહીં, રાઈટ. લાઈન નંબર 16 થી લાઈન નંબર 21 સુધી તમે એ ચેક કર્યું કે કોઈ ફેક્ટર છે કે નહીં. તમારો ફાઇનલ ડિસિઝન, તમારો ફાઇનલ આન્સર જે છે એ તો તમે પ્રિન્ટ કરો છો 23 થી 26માં, રાઈટ. એટલે આ પ્લેસથી, આ એક પ્લેસથી બીજી પ્લેસ ઉપર તમારે એક સિગ્નલ મોકલવું છે કે તમે અહીંયા શું કર્યું. સો ઇટ્સ કાઇન્ડ ઓફ, તમે એક પ્લેસ ઉપર બેઠા છો અને તમારો ફ્રેન્ડ બીજી પ્લેસ ઉપર બેઠો છે, તમે બે ભેગા નથી થઈ શકતા, પણ તમારો ફ્રેન્ડ જે કેલ્ક્યુલેશન કરે છે એ કેલ્ક્યુલેશનના બેઝ ઉપરથી તમને કંઈક સિગ્નલ આપવું છે એણે. હવે જો તમે બે ભેગા નહીં થઈ શકો તો એ ત્યાં બેઠો બેઠો કંઈક સિગ્નલ આપશે અને એ સિગ્નલ તમે રિસીવ કરશો. હવે એ સિગ્નલ કંઈક સાઇન બેઝડ હોઈ શકે. માનો કે તમારો ફ્રેન્ડ ત્યાં બેઠો બેઠો એક ફ્લેગ જે છે એ ફરકાવે છે, ઝંડો ફરકાવે. સો કંઈક એવું જ. હવે એ ઝંડો ફરકાવશે તો તમને એ જોઈને ખ્યાલ આવશે કે ઓ યા, એ સિગ્નલ મળી ગયું. સમથિંગ લાઈક દેટ આપણે અહીંયા જોઈએ છે. એટલે આ વેરિયેબલને મેં ફ્લેગ કીધો. અધરવાઇઝ ધીસ વેરિયેબલ કેન બી XYZ. તમારે જે લેવો હોય એ લઈ શકો, બટ વેરિયેબલનું નામ હંમેશા આપણે એવું રાખીએ કે જેનાથી ખબર પડે આ વેરિયેબલનો યુઝ શું છે. એટલે આ વેરિયેબલને મેં ફ્લેગ કીધો. 0 એટલે કે એ ફરકતું નથી. ફ્લેગ 0 મતલબ અત્યારે એ ફરકતો નથી. હવે તમારો ફ્રેન્ડ જે છે એ નંબરને ચેક કરે છે, 1 by 1 ચેક કરશે કે ભાઈ આનો કોઈ ફેક્ટર પોસિબલ છે કે નહીં. તો એ નંબરને પહેલા 2 થી ડિવાઈડ કરશે, પછી 3 થી ડિવાઈડ કરશે, 4 થી ડિવાઈડ કરશે અને ચેક કરશે કે રિમાઇન્ડર 0 મળે છે કે નહીં. જેવું એને એક રિમાઇન્ડર 0 મળી જાય એટલે એ ફ્લેગ ફરકાવી દેશે, રાઈટ. એ શું કરશે, એ ફ્લેગ ફરકાવી અને પોતાનું કામ બંધ કરી દેશે, પછી એ આગળ નહીં વધે. સો બ્રેક. બટ જેવો એણે ઝંડો ફરકાવ્યો તો તમે એ ઝંડાની કન્ડિશન ઉપરથી કહી શકશો કે એ નંબર પ્રાઇમ નથી, રાઈટ. જો એણે ઝંડો ફરકાવ્યો તો તું એમ કહી દઈશ કે ભાઈ નંબર પ્રાઇમ નથી. પણ માનો કે એણે આખી પ્રોસેસ પૂરી કરી દીધી, એક પણ ફેક્ટર નથી મળતો, તો એ ક્યારેય ઝંડો ફરકાવશે નહીં. એ એની આખી પ્રોસેસ પૂરી કરી નાખે છતાં પણ ઝંડો નથી ફરકતો તો તમે એમ કહી શકો કે નંબર ઇઝ અ પ્રાઇમ નંબર. ઓકે, ક્લિયર નો? સર આપણને આવા પ્રોગ્રામમાં ખબર કઈ રીતે પડે નવો લેવો? that's what is the logic. મેં એટલે જ સમજાવ્યું કે આ પ્રોસેસ તમે લાઈન નંબર 16 થી 21માં કરો છો, પણ એનું ડિસિઝન તમારે ક્યાંક પાછળ લેવું છે. જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન અલગ થતું હોય અને પ્રિન્ટિંગ ડિસિઝન અલગ હોય તો તમારે ફ્લેગ લેવો પડે. હવે તમે એમ કહેશો કે સર આ પ્રિન્ટએફને હું આની અંદર જ મૂકી દઉં તો ડિવાઈડ ન થાય, રાઈટ. જો ડિવાઈડ થાય તો નોટ અ પ્રાઇમ નંબર, અને ડિવાઈડ ન થાય તો અહીંયા એલ્સમાં પ્રાઇમ નંબર. પણ ઇફ એલ્સ જો તમે લૂપની અંદર લેશો, રાઈટ, એલ્સ પાર્ટ જો તમે અહીંયા લખશો તો લૂપ તો 5 વખત ચાલે, 10 વખત ચાલે, 15 વખત ચાલે. એલ્સ જે છે એ એટલી વાર એક્ઝિક્યુટ થશે તો તમારું પ્રિન્ટએફ એટલી વધારે વખત એક્ઝિક્યુટ થાય અને એકથી વધારે વખત આન્સર બી પ્રિન્ટ થાય. દેટ ઇઝ નોટ અ પ્રોપર વે. આન્સર તો એક જ હોવો જોઈએ ને. એટલે મેં અલગ કર્યું, કેલ્ક્યુલેશન અલગ કર્યું અને પ્રિન્ટિંગ અલગ કર્યું, રાઈટ. આ સમજાય છે? Just unmute and speak because I'm not looking at chat window right now. Okay. So that's the reason. તમે અહીંયા else લખશો તો શું થશે એક વખત એ બતાવી દઉં. ચાલો, તમે એમ કહેશો કે when you can perfectly divide it, તમે એમ કહેશો કે it's not a prime number. So control X, અહીંયા પ્રિન્ટ કરી દીધું, મને ફ્લેગની કોઈ જરૂર નથી. બટ જો એ ડિવાઈડ નથી થતું તો તમે એમ કહેશો કે that's a prime number. So એ પ્રાઇમ નંબર તમે એલ્સમાં પ્રિન્ટ કરવા જશો and you do something like this one. But this is not a proper way because you are running this loop multiple times
દર વખતે નંબરને ડિવાઈડ કરો છો, પણ જ્યારે પણ નંબર ડિવાઈડ નહીં થાય એટલી બધી વખત તમને પ્રાઇમ નંબર પ્રિન્ટ થશે. So that's not a proper way. Let us have a look at that thing. Oh, sorry. Look, 6 is not a prime number. Well, that's not proper way. That is not a proper way actually. Let me save this thing and again check it out. We have if, break, else, prime number, and yeah, let me save it and again run this program. It says 6 is not a prime number, right? So that, well, the 6 is actually 6 is not a prime number. That's perfect. But now क्योंकि 6 जो है वो 2 से ही डिवाइड हो गया, पहली बार जो लूप चला 2 से डिवाइड हो गया, हमें मैसेज मिल गया और ब्रेक हो गया. सो दैट्स परफेक्ट आउटपुट. बट नाउ लेट इफ आई रन दिस विथ 7 तो आपको दिखेगा. और इट सेज 7 इज अ प्राइम नंबर और एक से ज्यादा बार आपको वो आउटपुट मिला बिकॉज हर बार एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, राइट? Let me run one more time and अरे कुछ भी नहीं किया फिर भी error. Let me run this code one more time and let us have something which can be divided by 4. Only 4. Yeah, let's have 12 which can be divided by, oh, it can also be divided by, let's have 21. So it is divided by 3, right? So when I go for I equals to 2, 21 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो एक बार ये प्रिंट हो गया 21 इज अ प्राइम नंबर, ये प्रिंट हो गया एक बार. नाउ व्हेन आई गो फॉर सेकंड रन I equals to 3, 21 डिवाइड बाय 3 परफेक्टली डिवाइड होगा और वहां पे प्रिंट हो जाएगा इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो आपको ये दोनों मैसेज मिलेंगे, 21 इज अ प्राइम नंबर, 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट? Because we print those messages inside this loop. लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाओगे जब तक आप ये सारे नंबर्स चेक ना कर लो. यू कैन नॉट डिसाइड योर आंसर एंड दैट्स द रीजन हम ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट नहीं कर पाएंगे. मैसेज हमें अलग से प्रिंट करना होगा, राइट? एंड व्हेन यू एनालाइज दिस थिंग आपको पता चलेगा कि ठीक है, ये मैसेज जो है वो तो मुझे बाद में प्रिंट करना होगा, मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट नहीं कर पाऊंगा. सो प्रोसेस कहीं पे होगी, डिसीजन कहीं पे लेना पड़ेगा. लेकिन अब ये दोनों अलग अलग जगह पे है, तो एक यहाँ से सिग्नल भेजने के लिए आपको फ्लैग चाहिए, राइट? एंड नाउ you can say that this program will work properly if I again run this code and give 21, तो वो एक ही बार मैसेज प्रिंट करेगा एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर वेदर इट इज प्राइम और नॉट प्राइम. ओके ना? सर फ्लैग के जगह पर दूसरा वेरिएबल तो यूज कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. वेल, व्हाट आई सेड, आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसका नाम कुछ ऐसे रखो कि आपको पता चले उसका यूज क्या है. अब ये फ्लैग की जगह पे मैं एक्स भी ले सकता हूँ, डजंट मैटर, इट इज जस्ट अ वेरिएबल. और फ्लैग की जगह पे एक्स रख लो, चलेगा. स्टिल दिस प्रोग्राम विल वर्क परफेक्टली. 21 it still runs, yeah. बट सर फ्लैग जो बुलियन वेरिएबल क्यों कहलाता है? Yeah, correct. Flag is a boolean. We use it like a boolean variable. लेकिन C लैंग्वेज में boolean डेटा टाइप है ही नहीं, करेक्ट? We have seen basic data types, primitive data types. It is integer, float, double, character and so on. वहाँ पे boolean नहीं था. तो मुझे जो boolean बिहेवियर चाहिए वो मैं इंटीजर से ले लूंगा, 0 और 1. ओके सर.
Yeah, so this is 24th program. Let's have a look at further programs. अब 25th प्रोग्राम से लेके 28th प्रोग्राम तक जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे रिलेटेड टू सीरीज हैं. इट्स रिलेटेड टू सीरीज समथिंग. एंड ये सीरीज जैसे प्रोग्राम्स हमने लेक्चर में भी एक बार करके देखे थे. लेट अस हैव अ लुक एट दैट प्रोग्राम फर्स्ट. तो लेक्चर के अंदर आई थिंक हमारा यही प्रोग्राम था. या वी हैड सीन दोज मल्टीपल सीरीज लाइक प्रोग्राम्स इन लेक्चर. बेसिक सीरीज दिखाई थी और उसके बाद हमने लास्ट में ये सीरीज देखा था, समथिंग माइनस समथिंग प्लस समथिंग एंड सो ऑन. एंड नंबर ऑफ टर्म्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट इट, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन ऑलरेडी इन द लेक्चर. एक्स की वैल्यू यूजर के पास से ले लो और यूजर खुद बोलेगा कि उसको कितनी टर्म्स चाहिए. अगर टर्म्स पहले से फिक्स हैं तो ये लेने की ज़रूरत नहीं. अब टर्म इक्वल्स टू 0 से लेके यूज़र ने जितनी टर्म्स बताई या तो फिर फिक्स टर्म है वहाँ तक आप लूप चलाओगे. विद इन योर लूप आप पहले ये जो टर्म है वो कैलकुलेट करोगे, राइट, एंड देन उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे. सो आंसर कैलकुलेट करते जाओगे एंड फाइनली एट द एंड यू आर गोइंग टू प्रिंट सम आंसर. सो सिमिलरली ये सारे प्रोग्राम कुछ ऐसे ही हैं. 25th program says you do 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square. तो ये n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स यूजर के पास से ले लो. अगर यूजर 5 देता है तो आप क्या करोगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, डन. तो आपकी लूप जो चलेगी वो अप टू 5 चलेगी. लूप के अंदर क्या करोगे, अगर आप लूप चलाते हो i इक्वल्स टू 1 से i इक्वल्स टू n तक, तो i इज योर टर्म. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज नथिंग बट i इंटू आई. i इंटू आई, i जब 1 है तो वो हो गया 1 स्क्वायर, i अगर 2 है तो वो हो गया 2 स्क्वायर, i अगर 3 है तो वो हो गया 3 स्क्वायर. एंड एवरी टाइम यू आर गोइंग टू एड इट इन सम आंसर वेरिएबल. लास्ट में आपको आंसर प्रिंट करना होगा, right? So that's very basic. You can do this thing. अगर ये कर सकते हो तो यहाँ पे टर्म थोड़ी सी चेंज हो गई. इंस्टेड ऑफ स्क्वायर you are going to have 1 divided by 1, 1 divided by 2, 1 divided by 3, 1 divided by 4. So it is nothing but 1 divided by I. अब डिवीजन करते हो तो याद रखना I अगर इंटीजर है, डेफिनेटली I इंटीजर है, लेकिन 1 डिवाइड बाय I फ्लोट आंसर आना चाहिए, ठीक है. सो अगर 1 डिवाइड बाय I कर सकते हो तो 1 डिवाइड बाय I फैक्टोरियल भी हो जाएगा, बिकॉज फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमने ऑलरेडी कर लिया है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी हैव सीन दैट फैक्टोरियल प्रोग्राम somewhere in the starting of loop. Yeah, here 17th program was the factorial program, right? So वहाँ से फैक्टोरियल का लॉजिक उठा के लेके आओ और यहाँ पे पहले i फैक्टोरियल फाइंड कर लो, उसके बाद 1 डिवाइड बाय i ही करना है. So 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल आंसर लेना है. So that will be your 27th program. 1 by 1 factorial, 1 by 2 factorial, 1 by 3 factorial, 1 by 4 factorial and so on, 1 by n factorial तक. So that is your 27th program. अब 28th program भी कुछ इसके जैसा ही है. Look, यहाँ पे divide by 1 factorial है, यहाँ पे divide by 2 factorial है, यहाँ पे divide by 3 factorial है, divide by 4 factorial, divide by 9 factorial. तो number of terms fix हो गई 9. divide by factorial यहाँ से मिलेगा. ये square जो है x raised to 1, x raised to 2, x raised to 3, x raised to 4, so it is x raised to I, right? So यहाँ पे कुछ power operation use कर लें math.h लेके, so वो भी हो जाएगा. And then आप ये बोल सकते हो कि even terms को आप minus कर रहे हो, right? And odd terms को आप add करते हो, plus minus plus minus plus minus करना है. So that we have also seen in this thing.
if term is even तो plus करना है या minus करना है. So like this one, you can decide that thing. Okay, so what we actually want to do is, let me copy this entire code, and something like this we are going to create a new file. Let me show you the 28th program. Not here, not in the lecture, but in the lab B. Let me create a new file that is practical 28. And we want to create a program something like this. Now, which program? So this is my 28th program, okay? So this is the program we want to achieve. Let us see how we can do that thing. So we want to have value of x. X to lena padega yahan se. So let us ask user, please enter value of x. अब number of terms तो यहाँ पे fixed है 9. तो ये n लेने की जरूरत नहीं है. So I don't want n here. तो ये loop कहाँ तक चलेगा? Because it is already fixed. From means 1 को भूल जाओ, ये 1 वाला जो part है उसको अगर आप भूल जाओ तो x by 1, x by 2, x by 3, x by 4 up to x by 9. तो up to 9 जाना है. So I'll fix it here. I'm going to run this loop from 1 से लेके 9 तक चलाऊंगा. ठीक है? So my terms are starting from 1 to 9. Now 1 to 9 मतलब आपने यहाँ से start किया. Remember, this much part you are doing. आगे वाला 1 तो आपने कहीं पे लिया ही नहीं. So आप ये कर सकते हो कि आपके आंसर में आप 1 पहले से डाल सकते हो. So आंसर में आप 1 पहले से डाल दो. And that is this one. ये सीरीज में पहले से जो 1 है वो 1 ले लिया. उसके बाद ये हो गया आपका पहला टर्म x. Then this is your second term, x square by 2 factorial. Then this is your third term, x raised to 3 by 3 factorial. Okay, तो जो particular term आप लेना चाहते हो, so this is the term. Let us have I equals to 1, I less than 9, और I plus plus कर लो. ठीक है? So that what I can do is I can calculate that term. So what is that term? Term is nothing but this thing, something like this. X raised to something divided by that factorial. So just focus on these terms right now. Right? These are the terms. And once you analyze these terms, you'll come to know that there is a there is some repetitive process. All these are the terms. अब ये first term जो है, it is nothing but x raised to 1 divided by 1 factorial. It is nothing but this thing. So what we want to do is, what is my term? Term is something like x raised to I, right? X raised to I, and that is divided by I factorial. This is my term. This is what I want to calculate. लेकिन इस तरह से calculate नहीं कर पाऊंगा. Why? Because factorial कोई operator नहीं है. This is actually not operator. And ये cap sign भी कोई operator नहीं है. That is a power thing. So we need to calculate this thing first. Correct? अब ये I factorial आप ढूंढ के लेके आओ. So let's say somehow I calculate that fact. अब कैसे ढूंढेंगे factorial को? So to calculate a factorial, we need a for loop where we can multiply that given fact by some iteration. उसको j ले लेता हूँ. So let me declare j here. Okay. And from where I should start? I should start j equals to 2 से लेके j
लेस देन इक्वल्स टू आई तक जाएगा बिकॉज ith फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है j प्लस प्लस. व्हाट इज दिस फैक्ट? तो एक फैक्ट वेरिएबल भी डिक्लेयर करना होगा एंड एवरी टाइम वी कैलकुलेट अ फैक्टोरियल हमें फैक्ट को 1 से इनिशियलाइज करना होगा. डोंट फॉरगेट टू डू दिस इनिशियलाइजेशन बिकॉज दूसरी बार जब आई की लूप चलेगी तो फैक्ट अगेन 1 से स्टार्ट होना चाहिए. सो वी इनिशियलाइज फैक्ट बाय 1, देन हमने फैक्टोरियल फाइंड किया. किसका फैक्टोरियल? आई का फैक्टोरियल, और वो फैक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया. नाउ दिस थिंग, हाउ कैन वी डू दिस थिंग? सो पावर ऑपरेशन के लिए वी कैन गो फॉर POW फंक्शन एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम math.h फाइल. तो हमें वो इंक्लूड करना होगा math.h. ओके, सो दिस इज अ हेडर फाइल जहाँ पे आपको POW पावर फंक्शन मिलेगा where you need to give your value and then the second is your power. So x raised to I divide by I factorial आपको मिल गया. Now x is integer, I is also integer, factorial is also integer. Then this final answer will be integer. अब ये दोनों में से किसी एक को फ्लोट करना होगा. मान लो कि आप फैक्ट को फ्लोट कर दो, चलेगा. कोई भी एक फैक्टोरियल कोई भी एक फ्लोट होना चाहिए सो दैट यू कैन हैव योर टर्म एज अ फैक्टोरियल फ्लोटिंग वैल्यू. तो ये मिल गया आपको टर्म. अब ये टर्म जो है वो आप आंसर में प्लस करोगे या माइनस करोगे? करेक्ट. सो यू आर गोइंग टू एड इट और यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट इट. वो टर्म को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे. नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट? डिपेंडिंग ऑन द टर्म नंबर. ये 1 तो ऑलरेडी कंसिडर कर लिया. दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन. सो अगर 1 है, 1, 3, 5, 9 ऑल दीज आर ऑड नंबर्स और ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. सो मॉड्यूलो 2 0 है तो ऐड करो वरना सब्ट्रैक्ट करो. सो दिस इफ एल्स विल वर्क perfectly and this is our code. Now ये टर्म अलग से लेने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ? I can have this calculation at this place directly. तो मुझे टर्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी and we need not to have this term variable. Okay, so yeah, and this should be I modulo 2 check करोगे. So this is the final program. आप लास्ट में आंसर प्रिंट करते हो तो आंसर मिल जाएगा. So let us test it. I save this code and let's run this code now. So it asks us value of x. अब x की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ then it gives me answer 0.14. Let's run this code again. अगर x की वैल्यू 3 डालता हूँ then it says 0.09. okay, अगर x की वैल्यू 1 डालोगे then your answer will be something greater than, so 0.37, right? So what it is, you simply put value of x in here and then do this entire calculation. तो आपको sum मिलेगा. That's what it is here. अगर चेक करना है तो मैनुअल कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हो. But this is how you can iterate a process, do some calculation, either add it or subtract it, and finally you print your answer, right? So this is the 28th program. You can take a screenshot if you want, just for your reference. Remember, ये कोड को और थोड़ा छोटा करते हैं. I can remove these curly braces because अंदर एक ही स्टेटमेंट है. कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर आप एक ही स्टेटमेंट डालते हो तो ये कर्ली ब्रैकेट ऑप्शनल है. जैसे कि फॉर लूप एक ही स्टेटमेंट था तो मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं किया. सिमिलरली इफ और एल्स
दोनों के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं किया, सो इट कैन बी डन। अब यहाँ पे ये फॉर लूप के अंदर काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हैं, सो दिस कर्ली ब्रैकेट इज कंपल्सरी। ओके, so that's all, which means we have understood programs from 23 to 28, and this is a list of programs you have to perform now. Okay, so that's all from my side. Now it's your time, it's your turn to perform these programs one by one. एक एक करके ये program करते जाओ. If you feel there is a difficulty, अगर आपको कोई error मिलता है, then you can ask me. हम वो error solve करेंगे, programs complete करेंगे. ठीक है? We all are here until we do all the programs. But I'm going to stop this recording. We don't want unnecessary recording here. So I'll stop this recording and you start doing your programs now, one by one. Go for it. Yeah, I forgot to ask you. Before I stop this recording, post your enrollment numbers so that your attendance will be recorded. Quickly post your enrollment numbers and then you start doing your program. Okay, I believe everyone has posted, so let me stop this recording now.